So for finding mean, we have three different methods. When method number one is called direct method, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है. Direct method mean finding formula is very simple. Mean is equal to summation fx upon summation f. We have two more methods. Second method is called shortcut method. It has another name, assumed mean method. One more name is quoted for the same, also known as deviation method. Formula partly similar to direct method ही है. Mean is equals to a plus summation fd by summation f. So हमने ये जो फॉर्मूला देखा था, यहां पे हमने डायरेक्ट समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ देखा. यहां पे भी कुछ समेशन एफ के साथ है, लेकिन वो एक्स नहीं है, डी है. नीचे समेशन ए है, साथ में वी हैव अ टर्म कॉल्ड ए प्लस. ना यहां पे जो वेरियस पैरामीटर्स हमने यूज किए उसका नाम क्या है? दिस स्मॉल डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन. सो स्मॉल डी का मतलब है डेविएशन, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए. कैपिटल ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन. नाउ व्हाट इज अज्यूम्ड मीन? आई विल टेल यू व्हेन वी टेक अ क्वेश्चन. So capital A is called assumed mean and the method is called shortcut method. More common name is shortcut method, assumed mean method या deviation method. We have one more method, method number 3, that is known by the name step deviation method. So shortcut method को हम deviation method बोलते हैं और इसे हम step deviation method बोलते हैं. In the latest 2025 basic sample paper issued by CBSE for maths, they have asked a question where they have specified find the mean of the given data using step deviation method. The formula is very much similar to the shortcut method. It is a plus, instead of summation fd we have summation fu, niche summation f, with that we have a multiplied by factor called h. This formula is called step deviation method. Here the various parameters. A we know it is assumed mean. U का मतलब है step deviation. The small u factor is called step deviation. इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x माइनस ए बाई एच, या फिर डेविएशन बाई एच भी बोलते हैं. एंड दिस टर्म h, इट इज कॉल्ड क्लास साइज. क्लास साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है किसी भी अपर लिमिट से उसके लोअर लिमिट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. What we get is the class size. So these are the various methods of calculation of mean. Mean को calculate करने के लिए, of course, what type of data are we talking? We are talking about grouped data. Grouped data mean calculation में ये तीन method use किए जाते हैं. Most accurate one being step deviation, of course. Grouped data का मतलब जहां पे हमें frequency term दिखाई देगा. Frequency वाले हर एक डेटा को हम grouped data के अंदर कैटेगराइज करते हैं. So formula number 1, direct method, where summation fx by summation f will give us the answer. Formula number 2, shortcut method, a plus summation fd by summation f. A is called assumed mean. वो कैसे निकालते हैं? Once we go into the question, we'll understand. Third method is step deviation method. This is the formula a plus summation fu by summation f into h, where h is the class size. किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास साइज निकालने के लिए हमें उसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना होगा. द डिफरेंस बिटवीन, इसे हम क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ भी बोलते हैं. इन सर्टेन बुक्स दे आल्सो मेंशन क्लास हाइट. ऑल सिग्निफाइज द सेम. दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग द वर्ड लेटर एच. So there we go with the very first question. The question is to find the mean and the method they have specified is shortcut method. शॉर्टकट मेथड को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है, इसका मीन कैलकुलेट करना है. वी नीड टू कैलकुलेट द मीन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड. पहले हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है एक बार रिकॉल कर लेते हैं. मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ.
This is what is the formula we have for the calculation of mean. Now, what are the various things we need to calculate? ध्यान रखोगे. So, what are the many more columns we are going to add in this table that I shall draw in the blue color? सबसे पहले हम calculate करेंगे x. What is x? It is also called class mark. किसी भी कॉलम का या किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय सिंपली एडिंग द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट एंड डिवाइडिंग बाय 2. सो जैसे ही हमारा क्लास मार्क कैलकुलेट हो जाएगा, कर लेते हैं. 0 and 10, if we add and divide by 2, we get a 5. 10 plus 20 by 2, we get a 15. Then this is 25, 35. Similarly, 40 plus 50, 90 by 2 is 45. जैसे ही क्लास मार्क का टेबल क्रिएट हो जाए, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? वी नीड टू कैलकुलेट ए फ्रॉम द टेबल. हाउ डू वी कैलकुलेट ए? यू जस्ट गो टू द क्लास मार्क वाला कॉलम. वी ट्राई टू गेट द मिडिल मोस्ट वैल्यू. हमने ऊपर से दो वैल्यू को छोड़ा, नीचे से दो वैल्यू को छोड़ा. व्हाट इज लेफ्ट विद अस? सो ये 25 किसका वैल्यू हो गया? ये ए का वैल्यू हो गया. नाउ वी हैव अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि अगर हमने ऊपर से दो वैल्यू को छोड़ा, नीचे से दो वैल्यू को छोड़ा, या तीन तीन छोड़ा, या चार चार छोड़ा, बीच में कोई वैल्यू नहीं है, बीच में दो वैल्यूज है, हो सकता है ना? यहाँ पे 5 डेटा था, हमने मिडिल डेटा ले लिया. अगर 6 डेटा होता तो क्या करते? मिडिल में दो लोग आते, हम दोनों में से किसी को भी ले लेते. अंडरस्टूड? अगर मिडिल में 6 लोग आते, 8 लोग आते, 4 लोग आते, हम मिडिल में से किसी को भी ए का वैल्यू ले सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डेटा है, हमने मिडिल मोस्ट डेटा लिया, दैट इज ए. अज्यूम्ड मीन का वैल्यू आ चुका है. नेक्स्ट कॉलम वी नीड टू कैलकुलेट इज डी. डी का फॉर्मूला क्या बताया था? x minus a. So the next column we need to calculate is d, which is x minus a. Now what is a? Can I write this as x minus 25? Yes or no? Because a का value 25 हमने जज कर दिया है. Now think, you go to every single x and get the value x minus 25. What is 5 minus 25? Minus 20. 15 minus 25? Minus 10. 25 minus 25? 35 minus 25? 10. 45 minus 25? 20. So we first calculated x, then we calculated d. Now finally we need to calculate the last column, which is f into d. What is f into d? क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए ना एफ डी. सो एफ के कॉलम को, ये एफ का कॉलम है और ये डी का कॉलम है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी गेट इज एफ डी. थिंक, व्हाट इज 6 इंटू माइनस 20? माइनस 120. 10 इंटू माइनस 10? माइनस 100. 15 इंटू 0? 0. 9 इंटू 10? 90. 10 into 20, that is 200. Having done so, अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए वहां चलते हैं. दे आर डिमांडिंग कैपिटल ए. डू वी हैव कैपिटल ए? 25 प्लस समेशन एफ डी. जो एफ डी का कॉलम है वहां जाकर के हमें टोटल कर देना है. लेट अस कैलकुलेट टोटल ऑफ एफ डी. सो इफ वी कैलकुलेट, देखते हैं. देखो ये दो वैल्यू ऐड करके कितना देगा हमें? 290. इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 220. इफ वी ऐड बोथ ऑफ दिस, व्हाट डू वी गेट? वी गेट 70. आई होप दिस इज क्लियर. सो एफडी का कैलकुलेशन वेरी सिंपल, हमें आंसर आ गया 70. सो हमने यहां पे पुट कर दिया 70 डिवाइडेड बाय. हाउ डू वी कैलकुलेट समेशन एफ? हम एफ के कॉलम में जाते हैं और सब ऐड कर देते हैं. सो इफ वी ऐड ऑल दिस वैल्यूज, 10, 6, 15, 9 and 10. So if I add this and this, 16, 31, 40 and 10, 50. So total will give us 50 here. So in the formula, I'll go and substitute 50. So 25 is okay. This 0, 0 gone. If I calculate 7 by 5, I shall get 1.4. 25 plus 1.4 will give me 26.4 as my final answer to this question. So this is yet another question from the same
मेथड, शॉर्टकट मेथड, हम फिर से वही करेंगे, मीन का फॉर्मूला रेडी करेंगे, दैट इज a प्लस summation fd by summation f. We now have to add additional 3 columns to it, and there the columns are, first we will find x, then we will find the deviation, and then we find fd. So d value is x minus a, and then this is fd. X value, the mid value of the class interval, so this is 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. डेविएशन के लिए हमें सबसे पहले अज्यूम्ड मीन रेडी करना होगा। मैंने ऊपर से 3 वैल्यू छोड़ दिए, नीचे से 3 वैल्यू छोड़ दिए, व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? 50. दिस इज माय अज्यूम्ड मीन, that is the value of a. So instead of writing x minus a, can I also write x minus 50? So 20 minus 50 is minus 30. This is minus 20, minus 10, then 0. 60 minus 50 is 10. This is 20. 80 minus 50 is 30. Now I will multiply my f and d. So this is my frequency and this is my deviation. If I multiply them, I get the answer as minus 180, minus 220, minus 70, 0. Then this is 40, this is 40, and this is 30. We very well know that we need to find the summation of two particular columns. One is fd and one is f. So अगर इनको हम addition कर देते हैं, so 40, 40 and this 30 makes it 110. So this and this, it will give us, we get minus 360. And if we add all these frequencies, this is 17, 24, 28, 32, 34 and 1, 35. So we get summation frequency 35. We now put the values. A value is 50. Summation FD is minus 360 upon 35. On calculation, we have 50. This is 5 sevens are, and this is 5 sevens are 35, 2. So we got minus 72 by 7. So that is 50 minus, if we calculate 72 by 7, we get 10.28. So from 50, if we subtract 10.28, our answer is 39.72. This is the final answer.